Assalamualaikum students. My name is Sadia. I am working as Subject Specialist Chemistry at DPS Sahiwal. Here I will teach you chemistry. Let's start our today's topic. Chapter number 2, Experimental Techniques in Chemistry. You have learned about qualitative and quantitative analysis, filtration, crystallization, sublimation, solvent extraction, and chromatography in your previous lectures. Today we are going to discuss the exercise of chapter number 2, which consists of multiple choice questions, fill in the blanks, true or false statements, and short questions. By the end of lesson, you will be able to solve some additional questions relevant to experimental techniques like filtration, crystallization, solvent extraction, and chromatography. You will be able to do work in chemistry lab more efficiently. Move towards multiple choice questions. Number 1. A filtration process could be very time consuming if it were not aided by gentle suction which is developed. Options are A. If the paper covers the funnel up to its circumference. B. If the paper has got small sized pores in it. C. If the stem of the funnel is large so that it dips into the filtrate. D. If the paper fits tightly. Answer is if the paper fits tightly. Reason: because for fast filtration, a gentle suction is developed by fitting the filter paper tightly in the glass funnel. Number 2. During the process of crystallization, the hot saturated solution A is cooled very slowly to get large size crystals. B is cooled at moderate rate to get medium sized crystals. C is evaporated to get the crystals of product. D is mixed with an immiscible liquid to get the pure crystals of product. Answer is cooled at moderate rate to get medium sized crystals. Reason: because slow cooling yield bigger crystals which usually contain solvent with impurities. Number 3. Solvent extraction is an equilibrium process and it is controlled by. Options are A. Law of mass action. B. The amount of solvent used. C. Distribution law. D. The amount of solute. Answer is distribution law. Number 4. Solvent extraction method is a particularly useful technique for separation when the product to be separated is A. Non-volatile or thermally unstable. B. Volatile or thermally stable. C. Non-volatile or thermally stable. D. Volatile or thermally unstable. Answer is D. Volatile or thermally unstable. Reason: because heat is not required during this process, so a sensitive compound can be used. Number 5. The comparative rates at which the solutes move in paper chromatography depend on the size of paper. B. RF values of solutes. C. Temperature of the experiment. D. Size of the chromatography tank used. Answer is RF values of solutes. Reason: because each component has its own RF value. Fill in the blanks. Number 1. A complete chemical characterization of a compound must include quantitative and qualitative analysis. Number 2. During filtration, the tip of the stem of the funnel should touch the side of the beaker to avoid splashing.
Number 3. A fluted filter paper is used to increase the process of filtration. Number 4. A solvent used for crystallization is required to dissolve dash of the substance at its boiling point and dash at room temperature. Large amount and small amount. A solvent used for crystallization is required to dissolve large amount of the substance at its boiling point and small amount at room temperature. Repeated solvent extraction using small portions of solvent are dash than using a single extraction with large volume of the solvent. More efficient. Repeated solvent extraction using small portions of the solvent are more efficient than using a single extraction with large volume of the solvent. Question number 3. Write true or false. If the statement is false, write the true statement. Number 1. A qualitative analysis involves the identification of elements present in a compound. This is true. Number 2. If the process of filtration is to be run smoothly, the stem of the funnel should remain empty. This is false. Correct is, if the process of filtration is to be run smoothly, the stem of the funnel should remain full of liquid. Number 3. If none of the solvents is to be found suitable for crystallization, a combination of 2 or more immiscible solvents may be used. This is false. Correct is, if none of the solvent is to be found suitable for crystallization, a combination of 2 or more miscible solvents may be used. Number 4. A solute distributes itself between two immiscible liquids in a constant ratio of concentration depending upon the amount of solvent added. This is false. Correct is, a solute distributes itself between two immiscible liquids in a constant ratio of concentrations independent of the amount of the solvent added. Number 5. Paper chromatography is a technique of partition chromatography. This is true. Question number 4. Why is there a need to crystallize the crude product? Answer is, because a crude product always contains impurities in it. Impurities may be soluble and insoluble. The insoluble impurities can be removed by the process of filtration, but the soluble impurities can only be removed by crystallization. That's why to get a pure solid compound, crude product is crystallized by using a suitable solvent. Now look at the picture. आप देख सकते हैं कि पिक्चर में हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 है उसके अंदर क्या करेंगे, जो इम्प्योर सॉलिड है उसको एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा। स्टेप नंबर 2 के अंदर उसको एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर स्टेप नंबर 3 के अंदर उसको फिल्टर करने के बाद कूल करेंगे तो हमारे पास स्टेप नंबर 4 में प्योर प्रोडक्ट आ जाएगा। आप ये सारा का सारा प्रोसेस अपने क्रिस्टलाइजेशन वाले टॉपिक के अंदर सीख चुके हैं। Question number 5. A water-insoluble organic compound, aspirin, is prepared by the reaction of salicylic acid with a mixture of acetic acid and acetic anhydride. How will you separate the product from the reaction mixture? Aspirin is insoluble in water. During its preparation, the reaction mixture is added in water. The aspirin is precipitated. Then it is separated by using filtration technique. The crude product obtained is then crystallized for purification by using mixture of the solvents.
क्या करेंगे कि जो एस्पिरिन आपके पास आ जाएगी उसको पानी के अंदर डालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एस्पिरिन है वो पानी में हल नहीं होती, तो एस्पिरिन सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी, बाकी जितना कुछ उसमें मटेरियल है वो सारा पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। फिर हम उसको फिल्टर कर लेंगे तो हमारे पास जो फिल्ट्रेट के तौर पे चीज ऊपर आ जाएगी वो एस्पिरिन होगी। फिर हम उसको दोबारा एक दफा क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे ताकि उसकी मजीद प्योरिफिकेशन हो सके, तो हमारे पास फाइनली जो एस्पिरिन है वो सेपरेट हो जाएगी। इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं ये एक फॉर्मूलाज हैं इन सारे कंपाउंड्स के जो हमने पीछे अभी देखे। इनकी आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। सैलिसाइलिक एसिड है, एथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एस्पिरिन तैयार हो जाएगी, और एथेनोइक एसिड हमें नहीं रिक्वायर्ड है, वो साइड प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, a solid organic compound is soluble in water as well as in chloroform. During its preparation, it remains in aqueous layer. Describe a method to obtain it from this layer. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो तैयार हो चुका है और वो पानी के अंदर हल हुआ है, हमने उसको पानी के अंदर से सेपरेट करना है, उसका तरीकाकार हमने देखना है। In this case, the separation can be done by solvent extraction. The organic compound is soluble both in water as well as in chloroform, and chloroform is almost immiscible with water. Now, organic compound can be separated by shaking aqueous layer with chloroform in a separating funnel. The compound will go in chloroform layer which is separated from aqueous layer. Then the chloroform is evaporated to get pure organic compound. क्या मतलब है सारी बात का कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पानी के अंदर हल हो चुका है, हमने उसको वहां से अलग करना है। हम उस पानी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो मिक्सचर बना हुआ है हम उसको सेपरेटिंग फनल के अंदर डालेंगे और हम उसके अंदर ऐड करेंगे क्लोरोफॉर्म और उसको शेक करेंगे। जब हम उसको बहुत ज्यादा शेक करेंगे तो सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल के चला जाएगा क्लोरोफॉर्म के अंदर। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें, सारा का सारा पानी यहाँ रह जाएगा और जो उसके अंदर से ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें हल हुआ था वो निकल के यहाँ चला जाएगा क्लोरोफॉर्म के अंदर। फिर हम यहाँ से टैप को ओपन करेंगे, जितना पानी है उसको यहाँ से जाया कर देंगे और हमारे पास क्लोरोफॉर्म के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आ चुका है उसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। क्लोरोफॉर्म इजीली इवेपोरेट हो जाती है, फिर हम उसको इवेपोरेट करेंगे तो पीछे जो हमारा सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो रह जाएगा। इस तरीकेकार से हम उस सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी से अलग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास फिगर है। इस फिगर के अंदर हमारे पास कुछ स्पोर्ट्स उन्होंने दिखाए हुए हैं, हमने इनकी कंपोजिशन बतानी है। द फॉलोइंग फिगर शोज अ डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम ऑन पेपर विद 5 स्पोर्ट्स। अननोन मिक्सचर X, सैंपल A है, सैंपल B, C एंड D। दिस इज X जिसकी हमें कंपोजिशन नहीं पता है कि इसके अंदर क्या क्या है। ये हमारे पास सैंपल A का स्पोर्ट है, ये सैंपल B का स्पोर्ट है, ये सैंपल C का स्पोर्ट है और ये हमारे पास सैंपल D का स्पोर्ट है। हमने अब उसको कंपोजिशन बतानी है इनकी क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे वो पूछ रहे हैं द कंपोजिशन ऑफ अननोन मिक्सचर X। ये जो X है इसका हमें बताना है कि इसके अंदर क्या क्या है, तो हम पहले डायग्राम से ही इसको देखते हैं। अगर आप देखें तो X के अंदर से आपको 2 स्पोर्ट्स निकलते नजर आ रहे हैं। दिस इज स्पोर्ट नंबर 1 एंड दिस इज स्पोर्ट नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखें तो स्पोर्ट नंबर 1 किसके बराबर पर आ रहा है, B के बराबर पे, और स्पोर्ट नंबर 2 किसके बराबर पे आ रहा है, C के बराबर पे। नो डाउट कि D के बराबर पर भी आ रहा है, लेकिन हम D को यहाँ पे एज ए रेफरेंस नहीं लेंगे क्योंकि D के नीचे एक और भी स्पोर्ट है, तो हम D की यहाँ फिलहाल बात नहीं करेंगे। उसको आपके इसके सेकंड पोर्शन के अंदर ये बात समझ में आएगी। फिलहाल आप यही देखें कि जो हमारे पास ये वाला सेकंड स्पोर्ट है ये किसके बराबर आ रहा है, C के बराबर, और जो फर्स्ट स्पोर्ट था वो किसके बराबर आ रहा है जी, B के बराबर आ रहा है। लिहाजा हम कह सकते हैं द क्रोमेटोग्राम शोज दैट द मिक्सचर X contains component B and C. It is observed that sample B and C has a sport with the equal distance covered as a mixture X. Now move towards the second part. Which sample is impure and what is its composition? अब हमने उनको बताना है ये जो सैंपल है हमारे पास। अब हम यहाँ पे X की बात नहीं करेंगे, सैंपल A, B और C और D की बात करेंगे। किसी भी स्पोर्ट में से हम यहाँ जब स्पोर्ट लगाएंगे उसमें से जितने स्पोर्ट ऊपर ट्रेवल करके जाएंगे उसके अंदर उतने ही कंपोनेंट्स होंगे। A में से आप देखें सिर्फ एक स्पोर्ट निकला, B वाले में से भी सिर्फ एक निकला,
सी में से भी सिर्फ एक निकल रहा है, जबकि डी में अगर आप देखो तो 2 स्पोर्ट्स निकल रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। इसका मतलब है कि ए, बी और सी तो बिल्कुल प्योर हैं, उनमें एक एक ही कंपोनेंट था। डी के अंदर 2 कंपोनेंट्स है, अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं। जो इसका ये पहला स्पोर्ट है ये किसके बराबर आ रहा है जी, ए के बराबर, और जिसका दूसरा स्पोर्ट है वो किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो डी है हमारे पास दिस इज इम्प्योर, और हम उसके अंदर देखेंगे कंपोनेंट कौन कौन से आ रहे हैं, ए एंड सी। अमंग सैंपल ए, बी, सी, डी ऑल हैव 1 spot except D. It means that D is impure. It contains 2 components A and C because these 2 spots are equal to the spots of A and C. Question number 8. In solvent extraction technique, why repeated extraction using small portions of solvent are efficient than using a single extraction but large volume of solvent? Repeated extraction using small portions of solvent are more efficient because more amount of substance is extracted. हम इसमें बार बार सॉल्वेंट को यूज करेंगे, एक ही दफा सारा सॉल्वेंट ऐड नहीं कर देते, थोड़ा थोड़ा ऐड करके शेक करते जाएंगे, सेपरेशन होती जाएगी, फिर दोबारा सॉल्वेंट ऐड करेंगे, फिर शेक करेंगे, फिर सेपरेशन हो जाएगी। तो हम बार बार थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट ऐड करके सेपरेशन करेंगे, ना कि एक ही दफा सारा सॉल्वेंट ऐड करके हम सेपरेशन करेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 9. Write down the main characteristics of a solvent selected for crystallization of a compound. Number 1. It should dissolve a large amount of solute at its boiling point and very small amount at room temperature. Number 2. It should not react chemically with the solute. Number 3. It should not dissolve impurities. Number 4. On cooling, it should give well-formed crystals of pure compound. Number 5. It should be cheap. Number 6. It should be safe to use. Number 7. It should be easily removable. चैप्टर 2 के स्टार्ट में आप ये सारे कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10. You have been provided with a mixture of 3 inks with different colors. Write down the procedure to separate the mixture with the help of paper chromatography. सबसे पहले देखेंगे हमें क्या क्या apparatus और chemicals चाहिए। You need a strip of chromatographic paper, capillary tubes, mixture of inks, mixture of suitable solvents, chromatographic tank, and sample of inks for reference. Procedure. Draw a line on a strip close to its one end by a lead pencil. Number 2. Now spot the line with a mixture of inks and separate sample A, B, C ink with capillary tubes. ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप है। सबसे पहले हम उसकी बॉटम पर एक पेंसिल के साथ लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद हम स्पॉट ऑफ इंक, डायग्राम में आपको सिर्फ एक स्पॉट ऑफ इंक दिखाया जा रहा है मिक्सचर का, और अगर हम ज्यादा भी लगाना चाहेंगे, सैंपल्स की इंक्स भी लगाना चाहते हैं, तो हम इसके साथ साथ एक एक स्पॉट सैंपल की इंक्स का भी लगा देंगे। Number 3. After drying, put it in chromatographic tank having solvent. जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो हम फिर इसको chromatographic tank के अंदर सस्पेंड कर देंगे। Number 4. When solvent along with the spores covers 3/4 part of the strip, put it out and dry. जब 3/4 पार्ट तक वाटर ऊपर राइज कर जाएगा, ये जो भी सॉल्वेंट हमने उसमें ऐड किया है, इन केस ऑफ इंक हम वाटर भी ऐड करेंगे सॉल्वेंट के तौर पर भी, तो हमारा काम हो जाएगा, तो उसको हम वहां से रिमूव करेंगे और उसको हम थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देंगे। देन कैलकुलेट द RF वैल्यूज ऑफ ईच इंक बाय नोटिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय इंक्स एंड सॉल्वेंट फ्रंट। इससे प्रीवियस लेक्चर क्रोमेटोग्राफी के अंदर आप लोग RF वैल्यू कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप दोबारा से वो वीडियो प्ले करके RF वैल्यू कैलकुलेट करना वहां से दोबारा सीख सकते हैं। कंपेयर द RF ऑफ द स्पोर्स इन द मिक्सचर विद द सैंपल टू इवेल्युएट द कंक्लूजन, और फिर हम उसका जो हमारे पास सैंपल्स थे उनके साथ कंपेरिजन करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। RF कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द इंक फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट।
ये हमने लिखा, दोबारा फॉर्मूला लिखा, फिर RF ऑफ इंक A। इंक A के लिए क्या करेंगे, A बाय Y। Y हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो सॉल्वेंट का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर आप देखें तो सबके अंदर Y लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि Y सेम होना चाहिए, सॉल्वेंट फ्रंट सेम होगा। ABC हर इंक का डिस्टेंस डिफरेंट होगा। आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, इस मिक्सचर में से, ये मिक्सचर का स्पोर था, उसके अंदर से क्या क्या निकली, एक पर्पल निकली है, एक ब्लू है, ऑरेंज है, रेड है और येलो है। हम इनका सेंटर लेते हैं और सेंटर से फिर हम यहाँ नीचे तक आके इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। दोबारा मैं आपको कह रही हूँ RF वैल्यू कैलकुलेट करना, आप अपनी प्रीवियस वीडियो प्ले करके वहां से सीख सकते हैं कि हमने किस तरह से RF वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखी थी। तो यहाँ पर सपोज दैट ये हमारे पास इंक A थी, ये B है, ये C है, इसी तरीके से ये D और E हो सकती है। जितनी इंक्स हम लेंगे उतने ही हम उनके नाम रख देंगे, तो उनका हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे कि उन्होंने यहाँ से स्टार्ट से लेकर अपना फाइनल कितना डिस्टेंस कवर किया है। वो डिस्टेंस हम यहाँ A, B और C में पुट करेंगे। और ये जो हमारे पास ये ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ये सॉल्वेंट का डिस्टेंस है, यहाँ नीचे से लेकर इसको हम लोग फाइंड करेंगे और ये हमारे पास Y होगा। तो Y सबका सेम होगा, A, B, C सबका डिफरेंट होगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास RF वैल्यू कहलाएगी। कंक्लूजन हमारे पास क्या आ गया, मिक्सचर ऑफ इंक इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर RF वैल्यूज। लेट्स हैव अ रिकैप। हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने MCQ सॉल्व किए, फिल इन द ब्लैंक्स देखी हैं, ट्रू फॉल्स किए, फिर हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखे और लास्ट में हमने इंक मिक्सचर की सेपरेशन देखी है बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। असाइनमेंट पे आ जाते हैं। पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, आपने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली है, तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इनको आपने सॉल्व करना है। नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Number 2, what is meant by filter medium? Number 3, how can you remove undesirable color from the crystals? Number 4, define sublimation. Define partition law. Differentiate between stationary and mobile phase. That's all about our today's topic. Thank you.